Hare Krishna. Welcome to our ISKCON Punjabi Bhag YouTube channel. The purpose of ISKCON Punjabi YouTube channel is to bring in front of you daily the beautiful darshan of the Lord. Melodious kirtans, Daily discourses, daily guidance, upcoming new festivals, and much more. So therefore, please stay connected with us. For that, you have to click the subscribe button And press bell icon. Thank you. Hare Krishna. I didn't know today was a disappearance day of Sri LochanDas Thakur. Sometimes I wasn't prepared, and oftentimes we're not prepared for when death comes. मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और अक्सर हम तैयार नहीं होते हैं शेषता जब मृत्यु आती है इसके लिए We were not prepared when Srila Prabhupada left. जब श्रीला प्रभुपाद इस पृथ्वी से गए तो हम उस क्षण के लिए तैयार नहीं थे And we made a little paradigm shift here with the class, and people weren't prepared for that either. हमने यहाँ पर जो कक्षा है उसका थोड़ा सा बदलाव किया पैराडाइम शिफ्ट और इसके लिए भी लोग तैयार नहीं थे. This lifetime is a precious gift. ये जो जीवन है ये बहुत ही बहुमूल्य उपहार है. For us to prepare for the Vaishnavas that may leave us physically, ऐसे वैष्णवों के लिए जो शायद हमें फिजिकली छोड़ के चले जाएं. and to prepare for our own change. और हमारे खुद के बदलाव के लिए परिवर्तन के लिए. So sometimes when we're not prepared, तो अक्सर जब हम तैयार नहीं होते we learn to prepare for death. हम मृत्यु के लिए तैयार होने के बारे में सीखते हैं. Sometimes when there is a change in protocol, कभी कभार जब एक प्रोटोकॉल में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, we begin to prepare for being taken by surprise and being unawares. तो हम जो चौंका देने वाली स्थिति है उसके लिए तैयार होते हैं. So I'd like to read something about Sri LochanDas Thakur श्रीला लोचनदास ठाकुर जी के विषय में कुछ पढ़ना चाहूँगी. in glorification of his life and his dedication to the process of Krishna consciousness. उनके जीवन की महिमा के विषय में और उनका जो समर्पण भाव था इस कृष्ण भावनामृत विधि के लिए उसके विषय में. Sri LochanDas Thakur was a disciple of Sri Narahari Sadakari Thakur, a dearest associate of Lord Gora Roy. श्रीला लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे. LochanDas Thakur said, "My hope of hopes is to be near the lotus feet of Sri Narottam Das Thakur." श्रीला लोचनदास ठाकुर कहते हैं, मेरी यही आशा है कि मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सनिकट रहूं and serve him with my very life. तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं. The cherished desire of the fallen LochanDas पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि is to be allowed by Narahari's grace नरहरि की कृपा से to sing the glories of Lord Gauranga. उन्हें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो. My Lord is Sri Narahari Thakur. श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं I am his servant. तथा मैं उनका दास हूँ. Bowing before him, I beg for his service. उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूँ. This is my only aspiration. यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है. LochanDas Thakur was present to the great opportunity he had and that we have to serve. श्री लोचनदास ठाकुर उपस्थित थे जो उनके पास एक बड़ा अवसर था सेवा करने का और यही अवसर हमारे पास भी इस समय उपलब्ध है. It is a privilege to serve our Guru. गुरु की सेवा करना एक बहुत बड़े सौभाग्य की
LochanDas Thakur wrote Caitanya Mangala, which tells many pastimes of Lord Chaitanya. LochanDas Thakur ने चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें गौरांग महाप्रभु की अनेक लीलाओं का वर्णन है. Those pastimes not revealed by Vrindavan Das Thakur or Krishna Das Kaviraj. जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर और कृष्ण दास कविराज ने उजागर नहीं किए. He mentions an especially touching conversation Sri Gaura Sundar had with Vishnupriya Devi the night before he took sannyas. उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णुप्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया. That conversation is not in this book. तो ये वार्तालाप इस पुस्तक में नहीं है. Being a talented musician, LochanDas told Mahaprabhu's pastimes in beautiful poetry filled with fire and rhythm. एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचनदास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है. Common people could easily understand the divine character of Sri Caitanya and awaken their religious feelings. जनसाधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाए. As devotees regularly chant the Vedic epics of Ramayana and Mahabharata, जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्य रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं. Gaudiya Vaishnavas still wander through Bengal reciting the Caitanya Mangala. उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं. LochanDas Thakur also wrote many songs praising Sri Caitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, and Gauridas Pandit. लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु व गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे. LochanDas Thakur stresses that Raganuga Bhaktis must take shelter of Gadadhar Vrindavaneshwari to attain Radha Govinda Prema Bhakti. लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनीश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to print and distribute LochanDas Thakur's Sri Caitanya Mangala. श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर पे श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे. Srila Prabhupada was very fond of his bhajans. श्रीला प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे. While singing Parama Karuna, Srila Prabhupada would plunge into the ocean of Gauranga Prem. परम करुणा गाते हुए श्रीला प्रभुपाद गौरांग प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे. Srila Prabhupada wrote an extensive commentary on this bhajan. प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी. Bhajo Bhajo Bai Chaitanya Nitai Sudridha Vishvashakuri. भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोई. LochanDas Thakur asks everyone, लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं, my dear brother, हे बंधु, just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm faith and conviction. केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो. Don't think that this chanting and dancing will not lead to the desired goal. It will. ऐसा मत सोचो कि ये कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा. ये ले जाएगा. It is the assurance of Lord Chaitanya Mahaprabhu that one will get all perfection by this process. चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा. Therefore, one must chant with firm faith and conviction. अतः व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप कीर्तन करना चाहिए. It's appropriate that today, on this day of the disappearance of LochanDas Thakur, that we're honoring Sri Caitanya Charitamrita. बहुत ही appropriate बात है कि आज इस तिरुभाव दिवस के दिन श्री लोचनदास ठाकुर के चैतन्य चरितामृत का सम्मान कर रहे हैं, उसको पाठ करके.
And in reading the pastimes of the different acharyas, we see that each had a slightly different mood. इन सभी आचार्यों के लीलाओं के विषय में पढ़कर हम जान पाते हैं कि हर आचार्य का एक हल्का सा अलग भाव होता था. LochanDas Thakur wrote pastimes that weren't written by other Vaishnava Acharyas. LochanDas Thakur ने उन लीलाओं का वर्णन किया जो अन्य वैष्णव आचार्य द्वारा व्याख्यान नहीं किया गया था. And it seems that he focused a lot on feelings, because his songs and his poetry invoked emotion in those who read it and sang his songs. और उन्होंने बहुत ज़्यादा परिवेश किया था भावों को लेकर, जो भी उसके काव्यों को पढ़ते, भजनों को पढ़ते थे, उनके अंदर भी उसी प्रकार के भाव जागृत होते थे. So this is the verse 245. So this morning we'll read from Sri Caitanya Charitamrita Madhya Lila, Volume 2, and we're on Chapter 9. Lord go ahead. Lord Chaitanya's travels to the holy places. What's the rhythm for this? Madhavacharya Stane. Please give me a little. Acharya Stane Ayane Tatvavadi Udupiti Krishna Deketa Hale Pramamadi. Madhavacharya Stane Aleyan He Tatvavadi Udupiti Krishna Dekita Hale Pramamadi. Madhavacharya Stane Aleyan Hatatvavadi Udupita Krishna Dekita Hanhaile Pramomandi Madi. Madhavacharya Stane Aleyan Hatatvavadi Deketa Hanhaile Pramomadi. Madhavacharya Stane Aleyan Hatatvavadi Udupiti Krishna Deketa Hanhaile Pramamadi. Madhavacharya Stane Aleyan Hatatvavadi. Yeah, why don't you just read in Hindi? भगवान कृष्ण के विग्रह देखी देखकर वहाँ हो गए प्रेम उन्मादी
तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्श विग्रह को देखकर भाव विहल हो उठे। तात्पर्य है इसका 5 पेज का तात्पर्य है। धैर्य बना के श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सह्याद्री के पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट 5 का क्षेत्र है, जहां मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्य के भट्ट के पुत्र रूप में 1040 शकाब्द में जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वसुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। अभी वे 5 ही वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वे एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। वे बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्री का आश्रम गए। वहां पर व्यासदेव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवद-गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यासदेव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्री का आश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवद-गीता पर अपना भाष्य पूरा किया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्री का आश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्श विग्रह निकला। अर्श विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए था। ज्यों ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्श विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। ये अर्श विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्श विग्रह को उडुपी लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्री का आश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे, तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। क्योंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्हें भी इस खुदाई में उसकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। गांग प्रदेश में प्राय हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी की एक ओर थे और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की कोई परवाह नहीं की।
अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुसलमान राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मान पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु अपने शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर वे उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे। वे ये सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरीकपुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुम्ल के शासक राजा जयसिंह की सहायता से वे ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ में पुंडरीकपुरी मध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उसके पुत्र नारायण आचार्य ने श्री मध्य विजय की रचना की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायण आचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वह विष्णु दूत कहलाया। उस समय ये ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंड जली नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्रीला मध्वाचार्य ने 70 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु 80 वर्ष की आयु में एक तरह उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विकृत मध्य विजय ग्रंथ देखना चाहिए। अभी एक पेज और है जब उनके परंपरा का व्याख्यान है, उसमें सारे आचार्यों का नाम लिखे हुए हैं। तात्पर्य को यही नाम देंगे। Hare Krishna. Hare Krishna. So, technically I'm not qualified to speak on Caitanya Charitamrita, since I really haven't read it, but Krishna's pastimes are amazing and unlimited, and Lord Caitanya Mahaprabhu specifically came as a devotee to teach us how to be devotees and to teach us how important relationships are. माता जी कह रहे हैं कि टेक्निकली मैं योग्य नहीं हूँ चैतन्य चरित्र पर कुछ बोलने के लिए, मैंने भी पूरी चैतन्य चरित्र में पढ़ी भी नहीं है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ एक भक्त के रूप में ये शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार से हम भक्त बन सकें, और उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि किस प्रकार से जो भक्तों के बीच में संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। And we can see how much respect Lord Caitanya had as he traveled through the holy places, honoring previous acharyas. और हम देख सकते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्राएं कर रहे थे तो कितना सम्मान था उनके हृदय में पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति। When he came to the place of Advaitacharya, of Madhavacharya, he became mad with ecstasy. जब वो मध्वाचार्य के जो स्थान है वहाँ पर आए तो वे भाव विभोर हो गए। There was a lot of feeling he had. उनके हृदय में बहुत सारे भाव उत्पन्न हुए। Caitanya Charitamrita is about bhav. चैतन्य चरितामृत भावों के विषय में है। Even if we're not on the level of bhav, we can appreciate the intimate relationships that the Lord has, and we can begin to appreciate
the relationships we have. चाहे हम भाव के स्तर पर ना हो, फिर भी हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ बहुत ही अंतरंग गूढ़ संबंध थे, और इस बात की सराहना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे संबंध जो भी हैं. Sometimes we think, oh, this person is so fortunate they lived in Lord Chaitanya's time, or Prabhupada disciple is so fortunate they got to meet Srila Prabhupada. कभी-कभार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर उपस्थित थे, या श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनका नाम श्रील प्रभुपाद से हुआ. But Krishna is always here, and he's always coming, and he always makes himself available to the devotees. तो कृष्ण हमेशा यहाँ पर उपस्थित है, वो हमेशा आ रहे हैं और अपने आप को उपलब्ध कराते हैं भक्तों के समक्ष. Sometimes when we wish we had some other association, or we were born in another time, we actually miss the gifts that are here right now for us. कभी-कभार जब हम ऐसी आकांक्षा करते हैं कि मैं उस समय उस काल में उपस्थित होता, तो इस क्षण में जो मेरे को उपहार उपलब्ध हैं उनसे मैं चूक जाता हूँ. Lord Chaitanya's mercy is so vast. श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी विशाल बड़ी है that it's available to each and every one of us. कि वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है. He brought us the Maha Mantra. वो हरिनाम लेकर आए. He showed us by the example of his life about loving relationships. उन्होंने अपने जीवन से ये प्रकट किया प्रेममय संबंध के विषय में. And Srila Prabhupada, in his detailed purports, really gives us access to the lives of the Vaishnava Acharyas. और श्रीला प्रभुपाद इतने विस्तृत तात्पर्यों से हमें जो वैष्णव आचार्यों के जीवन के विषय में जोड़ते हैं, एक्सेस करवाते हैं. Certainly Madhavacharya was very special. निश्चित रूप से श्री पादाचार्य बहुत ही विशेष थे. It's said that actually he was an incarnation of Hanuman. वो बताया जाता है कि वो हनुमान के अवतार थे. That's right, isn't it? Thus he had so much strength. कि उनके पास इतना बल था. And yet here in the purport it says that at one point he was challenged, and there was an attempt to prove he was not in line, and his books were taken away. और यहाँ पर तात्पर्य में आता है कि एक बार उनको चुनौती दी गई कि वो वैदिक परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, और उनकी सारी पुस्तकें चुरा ली गई. And even Srila Prabhupada had his writings and books stolen, and his typewriter stolen at some point. और श्रीला प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा हुआ कि उनके कई सारे लेख और उनका टाइपराइटर है उसको चुरा लिया गया. Sometimes we think, oh, poor us, we don't have facility. कभी-कभार हम लगते हैं, ओ हम बेचारे, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं. Krishna is giving all facility. कृष्ण हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं. And when Krishna takes something away, और जब कृष्ण कुछ हमसे ले लेते हैं, he shakes us up वो हमें हिलाते हैं, so that we will dive in deeper. जिससे हम और गहराइयों में जा सकते हैं. And he gives us examples in the Vaishnava Acharya's life so that we don't think we're the only ones. और वो वैष्णव आचार्यों के जीवन से हमें उदाहरण देते हैं कि जिससे हम ये समझ सके कि हम एकमात्र ऐसे जीव नहीं हैं इस सृष्टि में जिसके साथ हुआ. We can see how they take all the trials and tribulations and continue forward. वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं. Deepening in their prayer. अपनी प्रार्थनाओं को और गहरा करते हुए. What do we do when trials and tribulations come? तो जब ऐसे परीक्षात्मक स्थितियां हमारे साथ आती हैं तो हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? Do we complain? Do we blame?
क्या हम शिकायत करते हैं या दूसरों पर दोषारोपण करते हैं? Do we pity ourselves? या अपने ऊपर बेचारा भाव लाते हैं? Krishna sends many opportunities to wake us up. कृष्ण हमें अनेक अवसर भेजते हैं हमें जगाने के लिए। Death is coming. कि मृत्यु निकट आ रही है। Now is the time to develop our feelings and our relationships. कि अब वो समय है कि हम अपने भावों को विकसित करें और संबंधों को विकसित करें। We're never ready for the Vaishnava Acharyas to leave. वैष्णव आचार्यों के अप्रकट होने के लिए हम कभी तैयार नहीं रहते। We're never really ready for our guru to leave. गुरु के अप्रकट होने के लिए हम कभी तैयार नहीं रहते। But certainly, we have an opportunity to prepare for our own leaving. परंतु निश्चित रूप से हमारे पास वो अवसर है कि हम जब अप्रकट हो उसके लिए हम तैयार हो सकें। Which helps us to come down off of the superficial. कि जो superficial level है, स्तर है, उससे हम नीचे उतरें। And deepen our practice. और जो अपना अभ्यास है, उसको और गहरा करें। Not in a pressure way, not in a denigrating way. एक दबाव अपने ऊपर डालकर इस तरह से नहीं, या अपने आप को नीचा दिखाकर इस प्रकार से नहीं। Not in a way that I am so fallen and feeling bad for myself. इस प्रकार से नहीं कि मैं कितना पतित जीव हूँ और अपने बारे में बुरा सोचते हुए। But in a way that we understand the preciousness of each moment of life. कि हम इस जीवन के हर क्षण का मूल्य जानते हुए, that we understand the preciousness of each event that Krishna is throwing at us every day. और प्रतिदिन कृष्ण हमारे साथ जितना भी परिस्थितियां हमारी ओर उछाल रहे हैं, उसको बहुमूल्य जानते हुए, so that we don't take this preciousness for granted. कि जिससे ये जो बहुमूल्यता है, इसको हम बिल्कुल granted वे में ना लें, so that we don't take one another for granted, कि हम एक दूसरे को granted रूप में ना लें, so that we don't take each opportunity for granted. कि हम हर अवसर को बहुत सस्ता ना लें। If we really thought that we were going to leave in a week, अगर हम ये सोचें कि एक हफ्ते के अंदर मैं अप्रकट हो जाऊंगा या मृत्यु को प्राप्त करूंगा, how would we chant? तो हम किस प्रकार से जप करेंगे, How would we pray? किस प्रकार से प्रार्थनाएं करेंगे, How would we speak to one another? हम एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करेंगे, How precious each moment would be. हर क्षण कितना बहुमूल्य बन जाएगा। We are not here in this process just counting the hours when we can get out of this place. हम इस विधि को इस प्रकार से नहीं ले रहे कि हम समय गिन रहे हैं कि कितने घंटे शेष हैं कि हम इस जगह को छोड़कर चले जाएं। Our life is not being so busy and getting so involved in so many activities that we're distracted from the real purpose of our life. हमारा जीवन अलग-अलग कार्यों में इतना बिजी रहना, व्यस्त रहना नहीं है कि जो जीवन का असली उद्देश्य है उससे हम विचलित हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। And it's not that being busy is wrong. ऐसा नहीं है कि व्यस्त रहना गलत है। But in our services we want to be present. परंतु अपनी सेवाओं में हम उपस्थित रहना चाहते हैं। We want to be aware. हम चेतन रहना चाहते हैं। We want to be grateful. हम कृतज्ञ रहना चाहते हैं। We want to be joyful हम बहुत ही खुश रहना चाहते हैं for each and every precious moment. कि हर वो क्षण जितना बहुमूल्य क्षण है हमें प्रदान किया जाता है। If we lived with that much gratitude and that much
preciousness, that each moment was precious. कि हम अगर इतने कृतज्ञता के साथ जीवन जिए या इतने हर क्षण इतना बहुमूल्य है इसका अनुभव करते हुए जीवन जिए, How different might our life be? हमारा जीवन कितना अलग हो सकता है. This is how Lord Chaitanya walked around. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से हर जगह भ्रमण करते थे. He was so present to the preciousness of every moment. He was in tears. और वो इतने वर्तमान में उपस्थित होते थे कि हर क्षण के बहुमूल्य के प्रति कि वो उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होता था. I don't know what he said to Vishnu Priya the night before he took sannyas. मुझे नहीं पता कि उन्होंने विष्णु प्रिया को क्या कहा संन्यास से एक रात्रि पूर्व. But he touched her heart. परंतु उन्होंने उनके हृदय को छुआ. He knew how precious he was to her. वो जानते थे कि वो कितने बहुमूल्य हैं विष्णु प्रिया के प्रति. And he let her know how precious she was to him. और उन्होंने उनको भी ज्ञात कराया कि कितने बहुमूल्य वो हैं उनके जीवन में. What if we let those that we know how precious they are to us? What if we did that? अगर जो हमारे करीबी भक्त हैं या जो लोग हैं अगर हम उन्हें ये बताएं कि वो कितने बहुमूल्य हैं हमारे जीवन के लिए. What if we thought that maybe I won't see this devotee tomorrow? ऐसा अगर हम सोचें कि शायद मैं इस भक्त से कल नहीं मिल पाऊंगा. How would I speak to that person? मैं उस व्यक्ति से किस प्रकार बातचीत करूंगा. If we take each and every moment as that precious, कि अगर हम हर क्षण को इतना बहुमूल्य स्वीकार करें and treated each moment and each person and each service with so much respect, कि हर क्षण को इतने सम्मानजनक हर व्यक्ति को इतने सम्मानजनक सम्मान के साथ लें, we could live a life with no regrets. हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का पछतावा न हो. And we could be ready to go at any time. और हम तैयार रहेंगे किसी भी क्षण जाने के लिए. This is Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनागत है. Being present when we chant. जब हम जप कर रहे हो तो वहाँ पर उपस्थित रहें उस क्षण. And when our mind runs away, being present that our mind is running away. और जब हमारा मन विचलित हो रहा है, My dear mind, please don't run away. मेरे प्रिय मन कृपया इधर-उधर ना भागो. Even treating our own mind with respect. Please, mind, come back. कि अपने मन को भी सम्मानजनक रूप से ट्रीट करें. We don't know how much time we have left. Please, come and join me. कि मेरे प्रिय मन कृपया वापस आओ. हमें नहीं पता कि कितना समय शेष है. We would beg our mind, please help me to be Krishna conscious. अपने मन से भिक्षा मांगते हुए कि हे मेरे प्रिय मन कृपया मेरी सहायता करो कृष्ण भावनामृत बनने के लिए. We would beg our God brothers and God sisters, please help me remember Krishna. कि हम अपने गुरु भाई गुरु बहन से भिक्षा मांगेंगे कि कृपया कृष्ण का स्मरण करने के लिए हमारी सहायता कीजिए. We would relish feedback instead of taking it personally. तो हमें जिस अलग-अलग प्रकार के जो फीडबैक मिलते हैं उसकी हम सराहना करेंगे. We would respect others so deeply that they would be touched and they would be enlivened in their spiritual life. और हम अन्य लोगों का सम्मान इतने गहराई से करेंगे कि वो उनके हृदय को छुएगा और वो अपने धार्मिक जीवन में जीवंत महसूस करेंगे. Being present, appreciating the preciousness of each moment. कि वर्तमान में उपस्थित रहना हर क्षण की जो बहुमूल्यता है उसकी सराहना करना. Has nothing to do with right and wrong and good and bad. इसका कुछ भी लेना देना नहीं है सही या गलत से या अच्छा या बुरा से. It is beyond the duality
of the material world. ये भौतिक जगत के द्वंद्व से परे की बात है। That is Krishna consciousness. ये कृष्ण भावनामृत है। When we get distracted and try to do it right and say the right thing and not be made wrong, and when we're so worried about how we look and what other people's opinions are of us, we distract ourselves from being present. जब हम विचलित हो अपने अभ्यास में और सही बनने का प्रयास कर रहे हो या इस सही दिखने का प्रयास कर रहे हो या इस बात के लिए चिंतित हो कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मैं उस क्षण में वर्तमान में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। We're up in our head trying to figure it out. हम अपने सिर में होंगे, हर चीज को किस प्रकार से ठीक करना है इस तरीके से सोच रहे हैं। Bhakti is in the heart. जो भक्ति है वो हृदय में है। So we do need to use our head. हमें अपना बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता है। But we may ask our head, we may ask our mind, please help me to descend into my heart. परंतु मैं अपने बुद्धि या अपने मन से ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि कृपया मेरी सहायता कीजिए हृदय में उतरने के लिए। Help me to find myself, my soul, my heart and soul. Help me to find my real self. मेरा जो असली अस्तित्व है उसको जानने के लिए पहचानने के लिए मेरी सहायता कीजिए। Help me to hear the voice of Super Soul. कि जो परमात्मा की जो आवाज है उसको सुनने के लिए मेरी सहायता कीजिए। And help me to feel very deeply how precious each person is. और सहायता कीजिए इस बात की सराहना करने के लिए कि हर व्यक्ति कितना ज़्यादा बहुमूल्य है। And each moment is. और हर क्षण कितना बहुमूल्य है। Please, Krishna, let me never take you and all your gifts for granted. कि हे प्रिय कृष्ण, कि मैं कभी भी आपको और आपके द्वारा दिए गए सभी उपहारों को कभी भी granted रूप में या सस्ते रूप में ना दूं। Because anything can change in a moment. क्योंकि कोई भी चीज एक क्षण के अंदर बदली जा सकती है। So, is there anything anybody wants to say or ask? किसी का कोई प्रश्न है या फिर Please. Hare Krishna. प्रभुपाद का एसोसिएशन हमें अभी भी मिल रहा है पुस्तक के माध्यम से और डिवोटीज के माध्यम से और साधना के माध्यम से। आपने अपने स्टेटमेंट में बोला कि आप प्रभुपाद को छोड़ने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए थे, जबकि उनकी हेल्थ भी ऑल ऑफ सडन डाउन ही हुई थी, धीरे धीरे डाउन थी, तो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। Although Prabhupada Association is available, so is books and devotees and sadhana, and as lecture you mentioned we were not ready when Prabhupada was in this planet. But we see that Prabhupada has dropped suddenly and he was becoming more and more like seems to be contradictory and now we were not prepared. Because we thought Krishna won't take Prabhupada away. Krishna can do anything. Prabhupada can do anything. कुछ भी कर सकते हैं, तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। We were in denial. आप उस परिस्थिति का सामना ही नहीं कर रहे थे। We were not ready. हम तैयार नहीं थे। We were swimming in His mercy. He created a whole environment for us. तो उनकी कृपा में हम गोते लगा रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा वातावरण हमारे लिए निर्माण किया। And we didn't realize how precious all of that was until He was gone. और हमें पता था कि वो कितना ज़्यादा बहुमूल्य है तब तक जब तक वो चले नहीं गए। And maybe I still don't realize how precious it is.
और हो सकता है कि मैं अभी भी इतना बहुमूल्य था शायद पूरा पूरा सम्मान ना करा सकूं. But I want to realize how precious it is. परंतु मैं इसका अनुभव साक्षात्कार करना चाहती हूँ कि वो कितना बहुमूल्य था. That's a pretty heavy topic, huh? Please. मेरा प्रश्न ये है कि प्रभुपाद को शुरू से उनके पिताजी ने और माताजी ने बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण के बारे में नॉलेज दी थी और भगवान और श्री कृष्ण के प्रभुपाद जी को शुरू से ही उनके पिताजी ने और माताजी ने शुरू से ही भगवान माता को उनकी स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत जिज्ञासु थी, परंतु जो उनके पिताजी थे उन्होंने शुरू से ही उनको कृष्ण प्रेमी बनाया और भगवान आज प्रभुपाद किस पोजीशन पे है, मतलब कि हम लोग सब उनको एक भगवान की तरह ही मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा ये भगवान का ज्ञान मिले, परंतु बच्चे नहीं आजकल हमारे आ पा रहे इस लाइन में, तो अब हम क्या करें? हम लोग तो आ गए, हमारी उम्र भी हो गई है, पर अब चाहते हैं बच्चे भी आए, पर बच्चे नहीं आ पा रहे. बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना, इस बारे में मुझे बताइए कि बच्चों को किस तरह हम लोग किस लाइन लाएं. Parents brought it for that way. Others, we are moving down the line to this movement, but our kids are not interested in practice. Our kids and in general, younger generations. So what can we do that inspires them to? Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. It's not an artificial imposition on our kids. कृष्ण भावना में एक कृत्रिम दबाव नहीं है मन पर, और कृष्ण भावना में एक कृत्रिम रूप से मन पर दबाव डाला नहीं है बच्चों के भी. When we are fixated on the rules, the regulations, getting it right, having our kids look a certain way, that they do Krishna consciousness and fit in this box. तो जब हम बिल्कुल सही दिखने का प्रयास कर रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस को उसी पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो डब्बा है उसके अंदर इस तरह फिट हो जाए. They will run away. They don't want to be put in a box. तो वो भाग जाएंगे क्योंकि वो डिब्बे के अंदर फिट नहीं होना चाहते हैं. When we develop our love for Krishna, for each and every living entity, for our children, when we love our children unconditionally, जब हम अपना प्रेम विकसित करते हैं, when we प्रत्येक जीवात्मा को जिसमें हमारे बच्चे भी सम्मिलित हैं, उनको जब हम प्रेम करते हैं बिना किसी कंडीशन के, when we are joyful in our devotional service, जब हम अपनी भक्ति में जीवन में आनंदित हैं, when we tell our children that we accept them and we love them, जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम उनको स्वीकार करते हैं और उनको प्रेम करते हैं, rather than imposing our ideals upon them, बजाय इसके कि जो हमारे आइडियल हैं उनके ऊपर थोपे, when we allow them a little space to experience life, जब हम उनको थोड़ा जगह देते हैं जीवन अनुभव करने का, but show them by our example another way, और उनको दिखाते हैं अपने उदाहरण से एक अन्य मार्ग. when they hit the wall of the material world, और जब वो जो भौतिक जगत का जो दीवार है उससे टकराते हैं, when they feel the pain of material energy, जब वो भौतिक प्रकृति का जो दर्द है उसको अनुभव करते हैं, we can take them in our arms and say that we love them. तो हम उनको अपने बाहों में उठाकर उनको बता सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं, Rather than say, see, I told you so. बजाय ये कहने के कि देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था. Krishna consciousness is not about being right and righteous. कृष्ण भावना में सही के विषय में नहीं है. It is the path of bhakti, love and devotion. ये भक्ति का और प्रेम का मार्ग है. When we love and we're devoted and we drop the righteousness,
जब हम प्रेम और भक्ति में होते हैं तो इस सही और गलत का इसको ध्यान देते हैं. We allow a big space for our children to come into. We allow a space, an entrance for them to come into Krishna consciousness. तो कृष्ण भावना में प्रवेश करने के लिए हम उन्हें बहुत बड़ा जगह प्रदान करते हैं. When we put so many expectations about how they should look and behave and act and speak, and at every single moment in time, we only leave a tiny little entrance hole for them to enter Krishna consciousness. तो जब हमारी अनेक अपेक्षाएं होती हैं कि किस प्रकार से उन्हें देखना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें कार्य करना चाहिए, तो हम कृष्ण भावना में प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही कम जगह उन्हें देते हैं. Does that make sense? Keep your arms wide open. Yeah, always. Wide open. I love you. कि अपनी जो बाहें हैं उसको पूरा खुला रखें. And be happy. और खुश रहें. Is it time to finish? Yes. Thank you so much for your time and your rapt attention. All glories to Sri Caitanya Charitamrita. All glories to Sri LochanDas Thakura. All glories to Srila Prabhupada, and all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Shukvaha Mataji ki